ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं पदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णदां सहितं श्रीविशाखविदं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। स्वाति माता जी कृष्णा मेघना माता जी Hare Krishna. Love of Krishna is not an easy thing to obtain, because by this love one can purchase Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu distributed this love of Krishna to anyone and everyone, even to the two drunkards Jagai and Madai. Narottam Das Thakura has therefore sung Dina Dina Hinnu Dina Hina Yata Chila Hari Hari Naam Udarila Tara Sakhi Jagai Madai. Chaitanya Mahaprabhu is so magnanimous that he delivered all kind of sinful men simply by allowing them to chant the name Hari Krishna mantra. The evidence of this is Jagai and Madai. At that time, of course, there were two Jagais and Madais, but at the present moment, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and his process of teaching, so many Jagais and Madais are being delivered. If Chaitanya Mahaprabhu is pleased, he can give Krishna Prem, love of Krishna to anyone, regardless of that person's qualification. If a person is giving charity, he can select anyone to take it. okay. स्वाति माता जी Without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, understanding Krishna is very, very difficult. Manushyanam sahasresu kaschid yatati siddhyaye. Bhagavad Gita 7.3. Out of many millions of people, hardly one tries to make his life spiritually successful. People simply work like animals, not knowing how to make a success. Once human life is successful when one's human life is successful when one understands Krishna. Otherwise, one remains an animal. Anyone who is not Krishna conscious, who doesn't know who Krishna is no better than an animal. But Chaitanya Mahaprabhu gave this concession to the fallen souls of this age. Simply chant the Hare Krishna Mahamantra and you will be delivered. This is Chaitanya Mahaprabhu's special concession. Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. Bhagavatam 12.3.5. Thank you. Now, Kunti was not an ordinary devotee. She had become one of the relatives of Krishna, and therefore Krishna had come to offer her respects. But still, she said, Krishna, I have become attached to two families, my father's family and my husband's family.
kindly help me become detached from these families. Thus, she illustrates that one must become detached from society, friendship, and love, all of which will otherwise entangle us. Yes, Sanjay Prabhu. As long as I think I belong to this family, I belong to this nation, I belong to this religion, I belong to this color, and so on, there is no possibility of becoming Krishna conscious. As long as one thinks that one is American, Indian, or African, that one belongs to this family, or that one is a father, mother, husband, or wife of this or that person, one is attached to material designations. I am spirit soul, and all these attachments belong to the body, but I am not this body. This is the essence of understanding. If I am not this body, then whose father or whose mother am I? The supreme father and mother is Krishna. We are simply playing the parts of father, mother, sister, or brother, as if on stage. Maya, the material nature, is causing us to dance, telling us you are member of this family and member of this nation. Thus, we are dancing like monkeys. Bhagavad Gita, 3rd chapter, 27th verse. It is said, Prakriti kriyamanani gune karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. This verse indicates that because the living entity has associated with a certain quality of nature, nature is making him dance according to that quality, and thus one is thinking, I am this and I am that. This information provided in Bhagavad Gita is the basic principle of understanding, and it will give one freedom. Pradeep Prabhu. The most essential education is that which enables one to become free from bodily concept of life. But unfortunately, scientists, philosophers, politicians, and other so-called leaders are misleading people so that they become attached to this body. It is the human life that it is human life that offers the opportunity to become Krishna conscious. But these rascals are stopping that opportunity by alluring people to bodily designation, and therefore they are greatest enemy of human civilization. One attains a human body after evolving through 84 lakh life forms, from aquatics to plants and then to trees, insects, birds, beasts, and so on. Now people do not know what is the next step in evolution, but that is explained in Bhagavad Gita, chapter 9, shloka 25. Yanti Deva Vrata Deva is the next step in evolution. One may, if one desires, go to a higher planetary system. Another, although every night people see so many planets and stars, they do not know what these higher planetary systems are. But from the Shastra, the Vedic literature, we can understand that on these higher planetary system, material comforts are available that are many and many times greater than those on this planet. On this planet, we may live for at most 100 years, but on a higher planetary system, one can live for lifetime we cannot even calculate. For example, the lifetime of Brahma, who lives on this planet, is on the highest planet stated in Bhagavad Gita, chapter Shloka 17. Sahasra Yuga Prayantam Aharyad Brahmano Vidu. We cannot calculate even 12 hours of Brahma with our mathematical figures, but even Brahma has to die. Even though one may have a long duration of life and no one can live permanently in this material world, nonetheless, one pre- if one prepares oneself, one may go to the higher planetary system. So simply, one may go to the Pitralokas. They are they are there. One may meet one's forefather if they have been able to go there. Similarly, if one desires, one may also remain here on earth. Or Yanti Madi Yajino Pimam. If one becomes a devotee of Krishna, one can go to him.
One may go to hell and one may go to heaven, or one may go to back home, back to Godhead, as one likes. Therefore, an intelligent person should think, if I have to prepare for my next life, why not prepare to go back home, back to Godhead? One's present body will be finished, and then one will have to accept another body. What kind of body one will accept stated in Bhagavad Gita? Or 14.18 Udvam Gachanti Sattva Sataha. Those who are in the mode of goodness, avoiding the four principles of sinful life, will live in their next life on a higher planetary system. Even if one does not become a pure devotee of the Lord, if one follows the regulative principles for avoiding sinful life, one will remain in goodness and get his opportunity. Human life is meant for this purpose, but if we taste our life just like living like cats and dogs, eating, sleeping, mapping, and defending, then we shall lose this opportunity. Rascals, however, do not know this. They do not believe that there is a next life. In Russia, Professor Kotovsky told me, Swamiji, after this body is finished, everything is finished. He is a big professor, yet still he said that. Such men may pose as scientists and philosophers, but actually they have no knowledge and they simply mislead others. This is our greatest source of grief, and therefore I have requested the members of the Krishna consciousness movement to challenge and defeat these rascals who are misleading the entire human society. People should not think that the devotees of Krishna are mere sentimentalists. On the contrary, the devotees are the greatest philosophers and the greatest scientists. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. I was just wanted to ask a quick question on this, right? यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब bodily conception, but we see in our day-to-day life, right? We still identify, और मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, but still we see problem है, पाकिस्तान का ये चल रहा है, उधर इसका चल रहा है, so much engrossed कुछ ना कुछ community और race. तो फिर क्या होप है हमारे लिए until we get out of that? तो आई थिंक उसमें आंसर वही है जो ऊपर दिया जाता है मेरे ख्याल से. जैसे चैतन्य महाप्रभु की मर्सी है, जैसे जगाई मदाई थे तो उनको भी उन्होंने डिलीवर किया है, तो इट इज अबाउट द मर्सी ऑफ द गिवर. वो किसी को भी दे सकता है जो दे रहा है. हाँ, बट हमारे उससे तो बहुत मुझे उम्मीद नहीं लगती ज्यादा, क्योंकि टू कम आउट ऑफ दैट कंसेप्शन कि हाँ हम वी आर अ प्योर सोल नॉट दिस बॉडी, it's going to be very 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 difficult. That's just my thought. Okay, कहाँ पर थे हम लोग? rascals, right? नहीं. Krishna has two engagements: paritranaya sadhunaya vinashaya cha duskritam, giving protection to the sadhus, the devotees, and killing the demons. Krishna gave protection to the Pandavas and Vishnus because they were devotees, and he also killed demons like Kamsa, Aghasur, and Bakasur. Of the two engagements, his killing of the demon was his major occupation. If we examine how much time he devoted to killing and how much time he devoted to protecting, we shall find that he devoted more time to killing. Similarly, those who are Krishna conscious should also kill, not by weapons, but by logic, by reasoning, and by education. If one is a demon, we can use logic and arguments to kill his demoniac propensities and turn him into a devotee, a saintly person. Especially in this present age, Kali Yuga, people are already poverty stricken and physical killing is too much for them. They should be killed by argument, reasoning, and scientific spiritual understanding. Yes. Dhananjay Guruji. Krishna addresses Krishna as Kunti addresses Krishna as Vishvesha, the Lord of the universe. Vishwa means universe and Isha means Lord or controller. The universal affairs are going on so nicely, with the sun rising just on time, the seasons changing, and the seasonal fruits and flowers making their appearance. Thus, there is no mismanagement. But how are these things
going on so nicely if there is no controller? If we see any establishment going on very well, we immediately understand that the manager, director, or controller of the institution is expert. Similarly, if we see the universal affairs going on nicely, we must know that behind them is a good controller. And who is that controller? The controller is Krishna, as stated in Bhagavad Gita. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. Therefore, Kunti addresses him as Vishvesa, the controller of the universe. People are interested only in pictures of Krishna embracing Radharani that depict the dealings of Radha and Krishna to be like those of ordinary boys and girls. They don't understand Krishna. Such obnoxious pictures should be avoided. Krishna is the supreme controller. Let there be a picture showing how Krishna is controlling the whole universe. That kind of picture is wanted, not these cheap pictures. Prabhu. Unless the living force is present within the body cannot move or work nicely. Similarly, within the universe, the cosmic manifestation, Krishna is present as the living force. Shirodaya, Kashai, Vishnu, and Paramatma or Paramatma. Therefore, Kunti addresses Krishna as Vishatma, the soul of the universe. The rascal do not know how this world is moving and how the world is acting. Therefore, they should learn from Srimad Bhagavatam. Kunti Devi also addresses Krishna as Vishwamurti, the personality of the form of the universe. When Arjuna wanted to see Krishna's universal form, Krishna immediately manifested it. This is another of Krishna's opulences, Vibhuti, the original form of the Lord. However, is Krishna with two hands playing on the flute? Because Arjuna was a devotee and wanted to see the universal form, Krishna showed it to him, but that was not his actual form. A person may address himself as a king, but his real natural appearance is shown at home. Similarly, Krishna's real form is seen at home in Vrindavan, and all other forms are expansion of his plenary portions. As stated in Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. He can expand himself in millions and millions of forms, Anantarupam, but he is one, Advaita. And he is infallible, Achyut. His real form, however, is the Divya Bhuja Murali, the form with two hands holding a flute. Therefore, the Kunti Devi says, you have your universal form, but the form which you are standing before me is your real form. Kunti Devi prays, please sever my tie of exception. Please sever my tie of affection for my kinsman. We are thinking this is my own, that is my own, but this is moha, illusion. Janayasa mahoyam aham mamati. How does this illusion come into existence? It begins with the natural attraction between man and woman. A man seeks a female and female seeks a man. This is true not only in human society but in also in bird society, bee society, and so on. This is the beginning of material attachment. When a man finds a woman and they unite, this attachment becomes even more firmly established. Tayor mitu hardaya grahamti ahuhu. How after now after the attachment increases to some degree, the man and woman look for an apart apartment in which to live together, and then of course the man needs to earn money. When they are well settled, they must have children, also have some friends to come and praise them. Oh, you such have a nice apartment and such nice children. In this way one's attachment increases. A student's education, therefore, should begin with brahmacharya, which means freedom from sexual attachment. If he can, he should try to avoid all this nonsense. If not, he can marry and then after some time enter Vanprastha.
retired life. At that time, one thinks, now that I have enjoyed this attachment so much, let me leave home. Then the man travels all over to various places of pilgrimage to become detached. The wife goes with him as an assistant. After 2 or 3 months, he again comes home to see that his children are doing nicely and then again goes away. This is the beginning of detachment. When the detachment is complete, the man tells his wife, now go live with your children and I shall take sannyasa, the renounced order of life. This is final detachment. The whole Vedic way of life is meant for detachment, and therefore Kunti prays, kindly help detach me from this family attraction. This is Kunti Devi's instruction. Okay, so we can stop here 7:25, and we can start with the learnings and realizations or comments. Anyone want to share? I was thinking, Prabhuji, mainly like abhi, we are in this situation where we are in family, right? We have wife, parents now. What do we do? और ये अटैचमेंट का भी हम कैसे जाएंगे? तो मैं वही सोच रहा था कि द ओनली वे जो मुझे लगता है कि जैसे इज एवरी सीइंग एवरीवन एज अ कृष्णा कॉन्शियस son or daughter of Krishna, right? Then or seeing them as a Vaishnava, that way probably. So जो भी हमारे पास घर भी है, जो भी हमारा है, हम अपने बच्चों को अपना ना समझ के अगर कृष्णा के प्रॉपर्टी समझें या अपने वाइफ को भी उसी तरह से देखें कि वो एक वैष्णव है, तो एक पॉसिबिलिटी दिखती है। नहीं तो जिस तरह के हम समाज में रह रहे हैं, आई डोंट सी एनी होप until we change our vision. बस यही है प्रभु जी। हाँ, माया Very true, Prabhuji. माया चारों तरफ से इतना ज्यादा प्रबल है, इतना ज्यादा भारी है कि वो फील ही नहीं होने देगी कि कोई डिफरेंस है। मतलब ऐसा, मतलब आत्मा को ऐसा फील होता है कि बॉडी ही उसकी है, मतलब वो खुद बॉडी है, बट वो ऐसा रियलाइज कराना पड़ेगा कि आत्मा अलग है, बॉडी अलग है। और प्रभु जी, आप वो जो कह रहे थे कि अभी जैसे ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे लोग ना जैसे हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए हैं, या फिर इस तरह के जो ज्योग्राफिकल अफेयर्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें तो उससे कैसे प्रभु जी, मतलब हम कैसे अपने को बचा सकते हैं? I want to know. को बचाने का तरीका तो प्रभु जी यही है कि उन डिस्कशंस को अवॉइड करना पड़ेगा, उन न्यूज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, और हमें अपनी साधना पे फोकस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। और कोई तरीका नहीं है। जितना हम उस डिस्कशन में घुसेंगे प्रभु जी, वी आर पुटिंग अवरसेल्फ इन मोर ट्रबल, और उसका कोई तरीका है नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि कृष्णा के अकॉर्डिंग तो सब उन्हीं के बच्चे हैं ना भगवान के। अभी इसका एक और पॉइंट ये हो सकता है कि डज इट मीन हम गलत को गलत नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, यू कैन से या दैट पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, तो गलत का आप गलत बोलने में कोई नहीं, बट हमें उसमें घुसना नहीं है। हमें उसमें अपने ओपिनियन दे सकते हो आप, बट बस उसमें घुस जाते हो तो वो प्रॉब्लम वहां पे होने लगती है। अवर कॉन्शियसनेस स्टार्ट getting corrupt, we spend time on discussing and all of that. कोशिश करें कि उस चीज को बढ़ावा ना दें, लेकिन गलत को तो गलत ही बोलेंगे। अगर दुर्योधन गलत था तो गलत ही बोलोगे आप उसे। अगर वो, तो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, क्योंकि डेमोनियक तो कोई भी हो सकता है, हिंदू में भी लाखों करोड़ों, तो इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग जिसमें गुड क्वालिटीज है वर्सेस बैड क्वालिटीज। यस, So it's not about the caste at all कि हिंदू मुस्लिम तो 14 साल पहले आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो उससे पहले भी चल रहे थे। क्रिश्चियन 3000 साल पहले आए हैं, महाभारत तो 5000 साल पहले हुई, रामायण तो करोड़ों साल पहले हो गई, रावण तो तब भी था। तो धरती पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो भगवान थे तब भी चल ही रहे थे ना। बस हमें वो देखना है, और उसमें आई थिंक ऑब्जेक्टिवली हम उसे कह सकते हैं, बट वी नीड टू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट, रादर फोकस ऑन अवर साधना। क्योंकि होता क्या है ना, ये बहुत आई एम सीइंग हमारे डिवोटी कम्युनिटी में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। मतलब जैसे बॉडीली कंसेप्शन रहता है ना कि जैसे आत्मा को लगता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि हम, मतलब वी कैन कंट्रोल ऑल दिस नॉनसेंस जो भी चल रही है ना, तो हम उसका पार्ट ऐसे बन जाते हैं जैसे वी कैन ड्राइव ऑल दिस सिचुएशन।
बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक कॉमन मैन जो मिडल मैन है ना, वो तो ही इज कम्प्लीटली यूजलेस रिगार्डिंग दिस पॉलिटिकल अफेयर, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट बोलने के अलावा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ बोले चाहे ना बोले, चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है। नहीं, हम प्रीच करें, हम तो हर किसी को प्रीच करें। हाँ, हम ना देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, हमें तो हर किसी को प्रीच करना है भाई। यू आर नॉट दिस, तुम ना मुस्लिम थोड़ी हो, तुम यू आर अ सोल, दैट इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने प्रीचिंग बढ़ाना है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है भाई। यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ रॉन्गली। डिफरेंट। तो अगर हम वो कर सकते हैं, अगर कोई मुस्लिम है उससे बात होती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर नॉट अवर प्राइमरी ऑडियंस, बट स्टिल अगर कोई बात होती है तो हम यही बोल सकते हैं भैया दिस इज आवर बिलीफ, हम तो भगवान एक है और हम तो आत्मा में विश्वास रखते हैं बस। तो ये तो बॉडीली कंसेप्शन है, क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। अदरवाइज प्रभु जी दिस इज अ बिग बिग हैम्पर फॉर अवर भक्ति। ये मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये नेशनलिज्म और ये हिंदू मुस्लिम इसमें बहुत ज्यादा रहा हूँ। मैं आरएसएस और बजरंग दल में रहा हूँ बचपन छोटे में, और काफी लंबे टाइम तक, तो आई हैव गॉन थ्रू इट। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस यस यस, ओके। बट हमें आंख बंद भी नहीं करनी है। हाँ, हमें अवेयर रहने की जरूरत है। हाँ, मतलब पता होना चाहिए चल क्या रहा है, बट उससे अलूप रहना है। हाँ, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है बस। प्रदीप प्रभु, you want to share something? नथिंग ब्रो जी, मैं बस ये कह रहा था कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग सोशली एंड स्पिरिचुअली अवेयर, कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे अवेयर रह सकते हो कि यू आर नॉट बॉडी। अगर जैसे ही आपको रियलाइज होता है यू आर नॉट द बॉडी, तो आप अपने को आइडेंटिफाई करना ही बंद कर दोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इंडियन हो। जैसे नेशनलिज्म का, नेशनलिस्ट होने का सबसे ज्यादा जो चल रहा है आजकल, आप चाहते ना चाहते हुए भी मुद्दों में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर विद गॉड ग्रेस और मर्सी हमें रियलाइज हो जाता है दैट वी आर नॉट बॉडी, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये विषय ही चर्चा का विषय बचेगा, कि क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे। क्योंकि जब बॉडी नहीं रहेगी तो मतलब आप कहीं पे भी बर्थ लेते हो ना, आपको आत्मा ही था, तो फिर आप जहाँ पे भी बर्थ लेते हो उसी नेशन हो जाते हैं। तो ना तो आप नेशन के रहोगे, ना रिलीजन के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, वो आप जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। और रही बात सोसाइटी की, तो टिल देन वी जस्ट नीड टू, और उसके बाद हमें शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, पर जब तक के लिए हमें सोशली अवेयर होना जरूरी है कि चल क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है हम उसे करेक्ट डायरेक्शन में कर सकें। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि प्रीच करना तो अल्टीमेट है, जरूर कर सकते हैं। एक पास टाइम आता है, उसमें क्या है कि कार्तिक जो भगवान के सुदर्शन अवतार थे, उन्होंने अवतार लिया था कार्तिवीर अर्जुन के नाम से। और इधर इधर दूसरी साइड क्या था, परशुराम जी के पिता थे जमादग्नि, जो सप्तऋषि थे। तो कार्तिवीर अर्जुन ने 2 बार अटैक किया जमादग्नि पे, तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड। तो दूसरी बार क्या हुआ कि वो तपस्या कर रहे थे जमादग्नि, तो कार्तिवीर अर्जुन आए जो सुदर्शन का अवतार था, उन्होंने यमदग्नि ऋषि का गला काट दिया। गला काटने के बाद मतलब जमादग्नि ऋषि इतने तपस्वी थे कि वो रेस्पॉन्ड कर सकते थे, वापस अपने आप को बैक टू लाइफ भी लेके आ सकते थे, श्राप भी दे सकते थे और डिस्ट्रक्शन का कॉज भी बन सकते थे कार्तिवीर अर्जुन का। बट बिकॉज वो मतलब जैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बॉडीली कॉन्सेप्शन से इतना ऊपर उठ चुके थे कि ही डिडंट केयर। उसने कहा कि फर्क ही क्या पड़ रहा है, शरीर मेरा ही नहीं है। तो जब गला काट दिया कार्तिवीर अर्जुन ने यमदग्नि ऋषि का, तो वो अपना उठ के ना, मतलब उनकी आत्मा जो है वो आराम से निकल के ऊपर चली गई सप्तऋषि के पास, सप्तऋषि के जो भी उनका रीजन होता है वहां पे। तो ही इवन डिड नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज द रीजन की वो कह रहे कि ये शरीर ही तो है, शरीर को तो मारा है, मेरे को नहीं मार सकता। और जैसे हम प्रभुपाद बुक्स में पहले भी पढ़ते हैं, एक फिलोसफर है प्रभु जी, बहुत फेमस है ना नवीन प्रभु जी, पहले हम डिस्कस करें, जो वो जेल में बंद हो जाते हैं। मेरे को आई थिंक आइदर वो सोक्रेट है या प्लूटो है, हाँ, सोक्रेत ही है शायद। तो
वो भी यही कहते हैं कि ये मुझे मार सुकरात सकते हैं। सुकरात सुकरात, हाँ। हाँ, अच्छा तो वो अच्छा। कहते हैं कि ये मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मुझे कैसे मारेंगे, तो मैं तो अमर हूँ। तो ये जब वो स्पिरिचुअली बूस्ट अप इतना होता था आदमी, तो अगर उस लेवल पे सोचने लग जाए तो मेरे को लगता है मिजरीज ही खत्म हो जाएंगी लाइफ की, जितनी प्रॉब्लम्स है। तो बट हाँ, वो that is possible only by reading shastras और मतलब हरि नाम कर करके कर करके। Yes, that's all I want to share. Dhananjay Prabhuji, you want to share something? Okay, Meghna Mataji, you want to add something? नहीं प्रभु जी, हो गया सब कुछ, हो गया। लेकिन ऑलरेडी खा लिए। चलो ठीक है। Prabhuji, can we stop? Naveen Prabhuji, can we stop? Yes, please, let's stop. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितपावनेभ्यश्च Srila Prabhupada ki jai. Thank you for joining everyone. Hare Enjoy. Hare Krishna. Thank you. Krishna. Thank you. Thank you very much.